representation, you're going to calculate the E naught of cell, and then you're going to write the reactions at anode and cathode. Please give it a try, guys. So the biomolecules Zan is an extra one. Can you please give the date? I think. Acha, wait a second. If you guys have given the date, then I would be having it. Okay, fine. So you have not given me any exact date for the chemistry exam in the form that you all submitted. Please give me the date also. When is your exam? Adil, can you please speak? Yes, sir. Have you have written a reaction at anode and cathode for in the previous classes or no? Yes, sir. Same thing you have to write. No, sir. Like we have to add it as well, or Sorry? we did the addition as well, right? Do we have to do that as well, Addition? or like the complete reaction, or just like separate anode Cell and cathode? reaction, that is known as cell reaction. Reaction at anode and cathode, and then you can also write the cell reaction. Okay. If you want to write the cell reaction, three things are there, no? No, sir, that is wrong. You have to choose an anode and choose an cathode. First thing that you have to do, you have got two things, zinc and potassium. Which of them do you think is going to be the anode and which of them is going to be the cathode? You have to first of all choose that. Then make a cell. After that only you are going to calculate the E naught cell.
I'm not speaking, Zan. Tell me what happened. You have a question. You have to do this question, nothing else. Yes, Samaya, that seems fine. Hmm. Abdurrahman, that is also correct, I think. Yeah, that's correct, Abdurrahman. Very good. Samaira and Abdurrahman, very good. Guys, please send me whatever you have done.
Guys, please send me whatever you have done. तो फहद आपका फर्स्ट वो, एक सेकंड, नहीं गलत है आपका पहला जिंक वाला। ओके फहद। Yes, sir. Look at the zinc one. See what what reaction is happening in zinc? Tell me in the cathode for the first one. फहद, सेल सही बनाया आपने, सेल सही बनाया, ठीक है। अब आराम से बताइए कैथोड में क्या डाला है आपने फर्स्ट क्वेश्चन में। हाँ फहद। Sir, in the cell representation, हाँ, एनोड है, कैथोड है, हम पूछ रहे कैथोड में क्या डाला है बताइए। zinc. जिंक डाला है आपने, ठीक है ना। क्या रिएक्शन हो रहा है जिंक में बताइए, कहाँ से कहाँ जा रहा है, जिंक से जिंक 2 प्लस हो रहा है, जिंक 2 प्लस से जिंक हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है कैथोड में, कैसा रिएक्शन हो रहा है बताइए। Reduction. क्या हो रहा है एग्जैक्ट स्पेसिफिकली। इन जनरल रिडक्शन होता है कैथोड में, वी ऑल नो, नेवर रिपीट दैट नाउ। नाउ टेल मी स्पेसिफिकली कौन सा रिएक्शन हो रहा है, कौन सा एलिमेंट कौन से आयन में कन्वर्ट हो रहा है, कौन सा आयन कौन से एलिमेंट में क्या हो रहा है, एग्जैक्ट रिएक्शन क्या हो रही है बताइए आप इन टर्म्स ऑफ एलिमेंट्स नेम। किसका रिडक्शन हो रहा है फहद। G, sir. जी सर बोल, अरे किसका रिडक्शन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है पहले वाले में। नहीं पता। पहला जो आपने सेल रिप्रेजेंटेशन किया उसके कैथोड में किसका रिडक्शन हो रहा है शायद फहद, सॉरी। Zinc का हो रहा है ना? क्या हो रहा है एग्जैक्ट रिएक्शन आपको पता है, हाँ या नहीं, हाँ या ना, एग्जैक्ट रिएक्शन क्या हो रही होगी, क्या लिखा है आपने, क्या लिखा है वो बताइए, जल्दी जल्दी बताइए ना, क्या लिखा है आपने कैथोड में, क्या लिखा है फहद, थोड़ा जल्दी प्लीज, जो लिखा आपने बस वही हम कहने के लिए बोल रहे हैं ना। इतना टाइम आप लोग लगाइएगा फहद, क्या लिखा है आपने कैथोड में। अरे आपने सही लिखा है, जो लिखा वो बोलिए तो एक बार, हम बोलने बोल रहे हैं, हम आपसे सवाल नहीं कर रहे कि क्या लिख दिया तुमने, बेकार लिख दिया, वो नहीं बोल रहे हैं। क्या लिखा है वो उसको बोलिए बस, आप जल्दी बोलिए क्या लिखा है कैथोड में, अच्छा ये जोर से बोलिए। अरे Zn2 हाँ plus फहद, 2 zinc. Zn. बहुत सही, एक बार अच्छे से बोलिए उसको, सही लिखा है आपने, ठीक से तो बोलिए, कॉन्फिडेंस में बोलिए उसको, क्या लिखा है आपने। अरे आपने सही लिखा, आप क्यों चुप हो जा रहे हैं बार बार, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या। Can all of you hear me? Samira, Adriel, please tell me guys. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आवाज आ रही है ना? अरे देखिए सर, शायद आपको लग रहा है हम डांट रहे हैं आपको, आपको डांट नहीं रहे हैं, ठीक है। आप उसको थोड़ा अच्छे से बोलिए, क्या लिखा है आपने, थोड़ा कंफर्टेबल फील कीजिए ना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के साथ। Zn2 plus 2, 2 Zn. एक बार प्लीज थोड़ा अच्छे से बोलिएगा आप, शांत नहीं रह गए। जी बताइए क्या लिखा है कैथोड में आपने, फिर से एक बार बोलिए। Zn2 plus 2 Zn, right? वेरी गुड, हाँ हाँ एकदम सही लिखा आपने, ठीक है एकदम सही है। नाउ is that taking in it, is it giving electricity or it is taking electricity according to this information that you have been provided? It is giving. क्या आपको इंफॉर्मेशन क्या दिया गया जिंक के बारे में, रिडक्शन दिया है ऑक्सीडेशन दिया है बताइए। Reduction. और रिडक्शन में क्या बोल रहे हैं, ये एनर्जी इसको ये इलेक्ट्रिसिटी दे रहा है या फिर इसको इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ रही है, इट नीड्स इलेक्ट्रिसिटी और इट इज गिविंग मी इलेक्ट्रिसिटी, Needs electricity. इट नीड्स राइट।
Yes. आपको दिख रहा है कि जो रिएक्शन आपने लिखा है कैथोड में सेम वही रिएक्शन की इंफॉर्मेशन दिया हुआ है यहाँ पे। कैन यू सी दैट फहद? जी सर। Yes. तो आपको समझ में आया क्या गलती हुई है? आपने जो रिएक्शन लिखा है, आपने रिएक्शन लिखा है क्या? Zn2 + 2 Zn, और इसके लिए आपने क्या बोला है? आपने बोला है इसका प्लस 0.76। ये सही है क्या? अकॉर्डिंग टू गिवन इंफॉर्मेशन फहद बताइए, सही है क्या? No sir. नहीं ना? क्या दिया हुआ है? स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या दिया हुआ है Minus इसके लिए? 0.76. बात समझ में आ गई आपको? जी सर। ठीक है, आपने सब कुछ, सेल रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल सही है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में आपने बोला ना, सेकंड क्वेश्चन में आपने क्या किया है यहाँ पे? सेकंड क्वेश्चन में आपने, ठीक है, फिर से आपने साइन उल्टा कर दिया। ठीक है, आई डोंट नो व्हाई यू हैव डन दैट, बिकॉज बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। जो रिएक्शन लिखा आपने उसके उसी के हिसाब से आपको यहाँ पे डालना होगा। ठीक है, whatever reaction you have written there. Okay. Yes, Adrian, that is fine. Correct. And many people have not sent me the answer till now. Please start speaking, guys. जिसको समझ में नहीं आ रहा है. Okay. Let me see others. Zan. First one is fine, Zan. Second one शायद आपने नहीं भेजा. First one is fine. Kinza. जो सेकंड वाला है जी Zan. सर, जी जी बोलिए. Second वाला भेजा आपने? नहीं भेजा आपने. Okay. Kinza, do you see what is the problem? आप मिस्टेक आइडेंटिफाई हुआ किंजा आपका? Sorry, sir. Did you identify the mistake? What you have done wrong in the first one? Zinc and potassium? Cell representation. No, the cell representation, there are, how many parts are there in cell representation? Anode and cathode, right? So your choice of anode and cathode is not right. Can you see why? And can you tell me why? How are you choosing anode and cathode, Kinza? Don't know, sir. Don't. ठीक है, एनोड में क्या होता है? देखिए, दोनों को चूज नहीं किया जा सकता, पहले किसी एक को चूज कर लीजिए. यू चूज जस्ट वन थिंग, एनोड. द अदर विल बी कैथोड. यस और नो? Yes, sir. Then you can write the corresponding reaction at cathode also. Okay, fine. So tell me, what do you want to choose? Anode or cathode? What do you want to choose first? Cathode. Cathode. Okay, fine. So in what happens in cathode? Tell me. Oxidation or reduction? What happens? Reduction. Yeah, always reduction. What happens in cathode? Reduction. No, not reduction. Always reduction. What happens in cathode, Kinza? Always reduction. Ah, very good. इसको ऐसे याद करो. Always reduction. Now, we have a choice between zinc and potassium. Reduction will happen. किसके लिए reduction होगा? जिसके लिए आसान हो. Yes, For sir. whichever element it is easier to reduce, that will get reduced. Yes or no? Yes, sir. ठीक है. That means its SRP, standard reduction potential, its potential to get reduced could be higher. Correct? Yes, sir. Okay, fine. Now you tell me, now you just look at these numbers. Minus 0.76 and minus 2.93. Which is higher? Which is greater? Minus 0.76. Minus 0.76 is greater. Yes, sir. So this will be my cathode. Got it? Yes, sir. Second वाले में बताइए, which will be cathode? .34. Plus 0.34. Now, always, if you see, if it was something like this, now, for example, see here, both the cases, reduction is only given. Okay, that is why I have just taken the numbers. If oxidation was given, then I have to switch the signs. You get it? Yes, sir. You get it? Yes, Pakka? sir. Pakka? Yes, sir. Okay, fine. ठीक है. So I hope you can correct it now, है ना? यहाँ पे आप बताइए. For the first case,
what will be my anode? Potassium. Okay. So how will I write this? K Will I plus write it slash like this? बताइए. Tell. K K plus plus slash K. slash K. What is wrong with this? It is wrong. Tell me what is wrong with this. Sir, Should be No. K slash. Wait. हाँ. किंजा आप बताइए. What is wrong with It this? should be K slash K plus. Why K slash K plus? Tell me. Why this? What's the difference? What's the difference between this and this? Because it's oxidation. What is oxidation? What I have written here, no? This is oxidation, right? Yes, sir. Okay, fine. Okay. Now tell me, this is going to give me energy or it is going to take energy? Sorry, sir. This reaction K2K plus, it is going to give me energy. What will be the E naught for this reaction? What will be the E naught for this reaction? Minus 2.93. Why are these two same reaction? Akinza, are they same? सर मुझे नहीं समझ आ रहा आप क्या पूछ रहे हैं. हम पूछ रहे हैं ये रिएक्शन का E naught कितना होगा? So won't it be minus 2.93? हाँ, it आप ये बताइए. Now you tell me. Minus 2.93 तो इसका है ना? Oh, ये दोनों yes. सेम है. नहीं दोनों सेम है. नहीं. तो फिर क्यों सेम होगा दोनों का? क्या चेंज है? क्या होगा बताइए आप. साइन चेंज होगा. तो साइन चेंज करना चाहिए था आपको. समझ में आ रहा है ना? जी. हाँ, बताइए क्या होगा E naught इसका? 2.93. है ना? प्लस 2.93. सर आई जस्ट वेट अ सेकंड. हम देख रहे हैं आपका डाउट क्या है. कैथोड में क्या रिएक्शन होगी बताइए. It will be Zn2 plus slash Zn And why not the other way around? because here is reduction Yeah, very good. Now this will have what E naught? and cathode is always reduction. Yeah, very good. So what will be the E naught for this reaction? It will have the same minus 0.76. Okay. The higher the value of reduction potential, the easier it is to reduce that element. Yeah, reduce that element or ion. Yes, sir. जिसका SRP ज्यादा वही reduce होगा. जिसका SRP ज्यादा वही reduce होगा. Now, who is going to come? किंजा आपको आ गया ना समझ में? जी सर. ठीक है, 10 बार कर लीजिए सेम 3-4 सवाल जो दिए हैं. And see, here we have done this question, right? Now I'm going to give you all of these data. You have to make your own cells. Okay, guys? तभी आएगा आप लोग को. अब now, please raise your hand if you want to get more trained, like Kinza. जिन्होंने आंसर नहीं भेजा, you have to come forward. I'm not going to choose anyone now. Just raise Sir, your hand. सर एक हाँ, डाउट है. Zain. हमेशा पॉजिटिव रहता है क्या सर रिएक्शन सर? नहीं, Zain, जोर से बोलिए क्या बोल रहा है? हमेशा पॉजिटिव रहता है सेल रिएक्शन क्या पॉजिटिव रहता है? लाइक टोटल ऐड करके Total. ना दोनों को. अगर बैटरी आप बना रहे हैं ना, अगर आप बैटरी बना रहे हैं, ठीक है, कौन बना रहा है? अगर आप बना रहे हैं बैटरी तो हमेशा पॉजिटिव ही बनाइए. ठीक है, ठीक जी बात. सर. ठीक है. What I have seen, you are, if you are constructing a cell, but let us say for example I gave you calculate the E naught for. अब अगर हम आपको सेल बना के दे रहे हैं Zn2 plus from Zn and a bridge K plus 2K. अब सेल किसने बनाया? आपने बनाया या फिर क्वेश्चनर ने बनाया? Who made the cell? Zan?
ये क्वेश्चनर बनाया ना। क्वेश्चनर, हाँ क्वेश्चनर बनाया, तब उसके बाद अब आपके पास जो आंसर आ जाए, ठीक है। क्वेश्चनर ने बनाया तो क्वेश्चनर के हाथ में था जैसा भी, अब उसने तो चूज जैसा भी किया होगा। यहीं पे देखिए, अगर आप जिंक के लिए डालिएगा, इफ यू विल गिव द वैल्यू फॉर जिंक, जिंक टू जिंक 2 प्लस इज गिवन एज -0.76 and K plus 2, this is plus, this is going to be plus because Zn to Zn to, K plus will be -2.93. Now this is going to be what? -2.17 volts. You can get minus when you have been given the cell already, but when you are constructing the cell, then you have to make it always positive, because if you are making a battery, then it should have some positive volts. Okay, fine. Anode and cathode का reaction सही से दिखाइए सुमेरा. You will see the number of electrons also. You have to balance the electrons. Okay. यहाँ पे सब का reaction देखिए, आपको ये समझ में नहीं आता है. Like why don't you guys just copy things? हम हमेशा यहाँ पे लिखते हैं ना, what is happening, reduction and oxidation. Okay, so always try to make it anode and cathode में क्या reaction हो रहा है. See, anode cathode. Okay. Azad, please send me the topics. So all of you now know na, how to represent cells, because no one is coming forward. Seems like everyone knows now. Okay, fine. So you have been given some standard electrode potential. Construct as many cells you can from the given data. Okay. Show the cell representation. And calculate the E0 cell. Let me know if you have not understood the question. That I have asked you to send the topics, not the whole syllabus. So topics on. Sorry? So these are the topics coming in exam. Like.
No, 7 these are the chapters. topics. You need a revision for which topics? Tell me that. So, okay. सर सर Tell me. ये mg और cr में अगर कैलकुलेट करें तो इंटू 2 करना पड़ता है क्या? नहीं, कुछ नहीं करना पड़ता इनको. खाली बस बैटरी रेट करना है ना? हाँ, you have to just same, nothing else. Okay, you just need into 2 किसमें करना पड़ता है? वो cr3 है ना, ये mg2 है ना, यूजुअली लाइक वो करते हैं ना इंटू 6. No, no, in the values you don't have to do anything. The values will be intrinsic. Okay, so the values don't change. सेल रिएक्शन अगर आप लिख रहे हैं तो वहां पे आपको सेल बैलेंस करने के लिए, इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने के लिए करना पड़ेगा. बट थिंक वी हैव रिटन दिस थिंग्स ना. Fahad, you have to. Okay, sir. Fahad, you have to construct cells from the given data. You have to choose any 2 elements. Then out of those 2, you have to take an anode. You have to choose which one of them is going to be anode, which is going to be cathode. And then you have to construct a cell after choosing anode and cathode, and then calculate the E0 cell. You can choose any 2. You can choose any 2 elements. From those 2, you have to choose which is going to be anode and which is going to be cathode. Okay, Zan. First one you have taken. Okay. Where is the bridge? There should be a bridge. Okay, Zan. Don't take it where you write things like it is very unserious. Okay, Zan. Can you hear me? हाँ सर, हाँ सर. ब्रिज बनाइए प्लीज. ठीक है, मार्क्स नहीं तो कट जाएंगे, मार्क्स नहीं मिलेगा. जी सर.
हाँ, फर्स्ट आपका सही है, वेरी गुड। सेकंड भी आपका, ओके वेट अ सेकंड, सेकंड में क्या किया आपने? नहीं सर, वो मॉम गलत, वो साइन में बदला था हमें, वो ऐड करना था, मैं क्या कर दिया। ठीक, आपको गलती समझ में आ गई, काफी है। So guys, please start sending the answers of whatever you have done till now. Okay, Abdurrahman, looking at your, okay, fine. K and the KG. Yeah, very good, correct, very good, very good. I'm just look again. Abdurrahman, you have also forgot the bridge. Can you see Yes, sir. that? Please make sure that you are drawing the bridge, otherwise marks कट जाएंगे, marks cell representation का नहीं मिलेगा. Yes, sir. So you have to write A, B, and C as well. No, not A, B, and C. Just the bridge. Two Okay, parallel sir. lines. Not two parallel lines. नहीं, one क्या बोलेंगे इसको? What will be this called? Two parallel lines या one parallel line? क्या बोलेंगे? Two parallel lines, ना? Yes, sir. Two parallel lines. हाँ, two parallel lines. Okay, for MG वाला second जो आपने बनाया है, very good. तीसरा आपने बनाया है, and also जिनको थोड़ा शक है ना अपने ऊपर कि हम सही कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वो तो जल्दी भेजें. Then only you will be getting some confirmation, right? Like whether you are doing it rightly or not. So those who are a bit dicey whether whatever they have represented is that correct or not, send that first, okay? सही वाले लोग confident है तो सही वाले लोग भेज दे रहे हैं. अब्दुल रहमान सही है आपका. K वाला HG, yeah fine, yeah, K1 is also correct. Third one, fourth है आपका फिर MG and HG, MG and HG, yeah correct, very good Abdul Rahman. So I'm more
Importantly, seeing this to Kinza, you send it. फहद आप भेजिए. जैन ने भेज दिया है. आई थिंक सहल का कुछ, सहल ने नहीं भेजा अभी तक कुछ भी. सहल, यू आल्सो सेंड इट. हुजैफा आप भेजिए. हुजैफा आपने कुछ नहीं भेजा है. Okay, Kinza, I have got from you. Let's see. Let us see. No. Minus अगर आ रहा है ना आपका Kinza, then it is wrong, because if you are constructing a cell, then it should be having positive values. वेरी गुड. आपने बस लगा दिया ई कैथोड माइनस ई एनोड. हम बोल रहे हैं आप लोग को वो फॉर्मूला नहीं लगाने के लिए. आप लोग को समझ ही नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत सही. वेरी गुड किंजा, वेरी गुड. ओके सर. Mg and Cr. So okay, Cr is going. Mg and C. Wait a minute. Okay. K plus and Ag. K to K plus Ag. K. Samira, the first one is wrong. फॉर्मूला नहीं लगाना है कुछ भी किंजा. तीसरी दफा आपको बता रहे होंगे हम. हमने तो कुछ फॉर्मूला नहीं लगाया ना ऊपर जो सवाल किए थे. Did I write any formula? Kinza, tell me. No, sir. क्या बस लॉजिक लगाना है आपको. इस रिएक्शन से क्या मिलेगा हमको. This reaction is going to give me how much. This reaction is going to give me how much. Well, it is, then just add these things. Okay, Kinza. Okay, sir. बट एनोड एंड कैथोड आप देखिए कैसे आप लगा वहां पे ये करा. हमने वो नहीं देखा. नेगेटिव साइन देख के ही बस हमने पता कर लिया कि इट्स नॉट राइट. Also, Samira, can you see that your first one is wrong? Can you see why, Samira? Yes, I'm sending one. Okay. Second one में सेकंड वाला भी आपका शायद गलत ही है. देखिए Hg वाला. Samira. Samira, can you see Hg1 is also wrong? Oh. Your Mg1 is fine. Mg and Cr. That is correct. Okay, so फहद फर्स्ट आपने बनाया है K प्लस एंड Mg के लिए. ठीक है. K प्लस में आपने रखा है इसको, Mg में रखा आपने. वेरी गुड फहद, सही है. सेकंड में you have chosen Ag and Hg. Ag and Hg. Okay. And second में Fahad, can you please turn your mic on? Yes, sir. How did you choose the anode and cathode? Oh. Like which one is greater, we will choose it as cathode. हाँ. कौन बड़ा The है? volt. Yes, sir. कौन बड़ा है? 0.79. अरे
कौन बड़ा है भाई? फहद, which is Yes, sir. greater? Which is greater, Fahad? 0.8, 0.8. समझ में आई बात? Yes, sir. Okay. आप अभी भी कंफ्यूज हैं क्या? No, sir, got it. है ना, नेगेटिव साइन रहा था तब बस ग्रेटर कौन सा बड़ा है वो देखना है आपको, ठीक है? साइन जो भी रहे, जो भी बड़ा हो लगाना। के प्लस एनसीआर में आपने, हाँ ठीक है, के प्लस एनसीआर वाला सही है। ओके, समायरा यू हैव करेक्टेड दोस्त। So more we have to do. सॉरी, और भी करना है सर। करिए ना, करिए, क्या हो गया, प्रैक्टिस हो रही है ना, करिए। हाँ ठीक है समायरा, आपने उसको करेक्ट कर लिया। किंजा आपको आया, समझ में नहीं आया अभी तक? करेक्ट करके भेजिए आप। शुड राइट ऑल 16? आपने परमुटेशन कॉम्बिनेशन कर लिया, इतना ही काफी। सारे 16 नहीं लिखने हैं, बट टिल द टाइम आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, तब तक तो करते जाइए ना आप लोग। गॉट इट एड्रियल? एड्रियल, ओके सर। हाँ यू सेंड इट फर्स्ट ना, आप पहले भेज दीजिए जितना भी किया है आप लोगों ने अभी तक। ओके ओके। Till I'm explaining other people, you can keep doing it. So I've not got answers from Zan. Zan आपने भेजा ना, Zan भेज दिया है। Okay, fine. Maimuna, Kinzaf, and Huzaifa. Huzaifa, what happened? No answers from you. And Maimuna, no answers from you also. What happened? I'm sending. हाँ भेजिए। Kinza, are you going to send me the corrected one? Yes, sir. हो जाएगा ना? अरे कीजिए, Sir, हो जाएगा कुछ ऐसा। हाँ बताइए बताइए Kinza, क्या हुआ? ई नॉट सेल की कैलकुलेशन सिर्फ गलती है या बाकी और में भी गलती है? बाकी सब तो सही है ना सर? बाकी सब एक सेकंड देख लेने दीजिए हमें। पहले आपने जिंक, पहले आपने क्या बनाया है इसमें? के एन ए जी ना, रिप्रेजेंटेशन तो आपने सही किया है। हाँ ठीक है ठीक है, ई नॉट सेल में आपकी गलती है बस, पहले में तो। सेकंड में हमको देखने दीजिए, सेकंड में आपका सेल रिप्रेजेंटेशन भी गलत है, सेल भी, पूरा सेल ही आपने गलत चूज किया है, ठीक है? और थर्ड में भी आपने सेल गलत चूज किया है। आई थिंक यू आर जस्ट गोइंग रैंडमली टिल नाउ, अभी भी। Can you explain how you have chosen the second cell? Kinza? So you said कि you can make as many cells. I just chose 2 of them and made a cell. हाँ आपने दो चूज किए, आपने दो एलिमेंट चूज किए, अब उन एलिमेंट में से तो आपको एनोडर कैथोड चूज करना पड़ेगा ना। समझ में आ रही है बात क्या कह रहे हैं हम? I told you to choose any two elements and then from those two you have to choose anode and cathode. Yes, sir. So how did you choose? आपने यानी चूज नहीं किया anode and cathode, right? Choose किया है। हाँ तो बताइए, Hg and Mg, कौन होगा एनोड, कौन होगा कैथोड, और कौन बनेगा करोड़पति, तीनों बताइए आप। नहीं छोड़िए, यही बता दीजिए आप, Hg और Mg में which is going to be anode? I have taken Hg as anode. टेकन हो ही नहीं सकता, आपको क्या करना है, चूज करना है ना, टेकन नहीं। हमने जो पिछले आप पहले आपको बताया, इतना समझाया, इसमें हमने कुछ भी ले लिया था क्या किंजा? Yes, sir. नहीं ना, हमने क्या पूछा था आपसे, बताइए, रिमेम्बर माय क्वेश्चंस। Yeah, which is बोलिए। great. विच इज ग्रेटर, थोड़ा और पहले जाइए। चलिए ठीक है, इन दोनों के बारे में डेटा किसका दिया हुआ है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन का? Hg एंड फॉर Mg, हाँ Both इन and दोनों reduction. के लिए, हाँ किसका डेटा दिया हुआ है?
ऑक्सीडेशन और Reduction. रिडक्शन? Reduction. ठीक है, आप ये बताइए हमने क्या पूछा आपसे? व्हाट डिड आई आस्क? अरे आपने सही आंसर दिया, हम आपको बस रिपीट करा रहे हैं ताकि आपको याद रहे कि हम सवाल क्या करते हैं। Which is बताइए। greater? हैं? Which is greater? विच इज ग्रेटर कहाँ पूछा अभी हमने पूछा, क्या पूछा अभी आपसे? इसमें क्या डेटा दिया हुआ है? क्या पूछा हमने आपसे? What's the data? व्हाट्स द डेटा? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। पूरा बोलिए Yes. क्या पूछा हमने आपसे? Oxidation or reduction? किसका डेटा दिया हुआ? बताइए किसका डेटा दिया हुआ है? Reduction. रिडक्शन। क्या डेटा है Hg के लिए? Reduction. हाँ मतलब व्हाट इज द एग्जैक्ट डेटा, व्हाट इज द नंबर फॉर Hg? 0.79. 0.79. Sorry. And for Mg it is Minus 2.37. कौन बड़ा है इसमें? 0.79. अगर 0.79 है तो ये कहाँ जाएगा? क्या ये तो? रिड्यूस होगा। आ रही है बात समझ में? कैसा? कब तक आएगा आपको बात समझ में? कितनी दफा? अब तीसरी आ दफा गया है सर। कि अब आ गया पक्की बात? जी सर। अब हम नहीं समझाएंगे आपको, बता दे रहे हैं। अगर आपने कुछ भी गलत किया तो हम तो इग्नोर कर देंगे, हम बोलेंगे हाँ सही है, बस ये लिख के आ जाइएगा, पूरे मार्क्स मिल जाएंगे आपको। उम्मीद करते जी हैं सर। टीचर भी आपके ऐसा हो, तभी मिलेंगे मार्क्स। चलिए ठीक है, ट्राई कीजिए आगे फिर से। जी सर। ओके, बुरा तो नहीं लगता है ना हम डांटते हैं तो? नहीं सर, आप कहा क्या? नहीं डांट बुरा लगना चाहिए थोड़ा, तभी तो सीखिएगा। ऐसे अच्छा सर। हंसी खुशी सब चल जाएगा तो कैसे चलेगा? You have to feel a little bit bad, not too much bad, a little bit bad. Okay, so K plus is there and okay fine. Adriel आपने तो बहुत बना दिया। Adriel has made how many? Says 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 and 6. Okay, fine. सबका पॉजिटिव आ रहा है वैल्यू, so it is okay. I hope it everything is okay. Okay, fine. K plus and Ag is fine. K plus and Hg, okay. K plus and Mg, Mg and Cr, Mg and C, okay, fine. Ag and Hg. Fifth one is wrong. Ag, हाँ, fifth one is wrong, yeah. ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है that you are identifying your mistake yourself only. Cr to Cr3 plus and हाँ, the rest all of them are fine, Adrian. And I have not got any answer from Mamuna till now. Mamuna and Huzaifa. Sir, my net is really slow. It's just sending. PDF is only not made. अरे आप PDF क्यों भेज रहे हैं? फोटो भेज दीजिए ना बस आप। Click a photo and send me. Sir, I'll try. Okay. चलिए, ओके, दैट्स इट गाइस। आप लोग रोक दीजिए सेल बनाना, बहुत सेल बना दिया आप लोगों ने, भेज दीजिए सारे सेल को आप लोग, है ना। मेड सो मेनी बैटरीज टिल नाउ। ओके, समायरा ने और भेजा है, फहद ने भी और भेजा है। भेजा है तो चेक करना पड़ रहा है। Hg एंड Mg ऊपर भेजा दिया सारा। Sir, repeat after me. The cathode should have higher standard reduction potential. It should have higher SRP. 5 क्लास के बच्चों को आप अगर बोलिएगा हायर SRP तो वो निकाल लेगा, ठीक है। आपको हम इतना दफा बोल चुके हैं कि स्ट्रेट फॉरवर्ड है। Which is higher? Sahel, which is higher, A or B?
बस बात समझ में आ गई सहल? हाँ, वेरी गुड। आप फहद आपका देख रहे हैं हम mg और आप ठीक है, आपका सेल तो सही बनाया है, वहां पे आपने इसको भी सही डाला है एंड mg and cl। हाँ या सही है, वेरी गुड, those are fine। So now write electrochemical series। हाँ electrochemical series, first time if the values of different electrode potential are arranged in a series of increasing or decreasing standard reduction potential SRP, increasing or decreasing order लिख लीजिए बस आप, order, then the series is called electrochemical cell, electrochemical series, my bad, electrochemical series। Right remarks? Number one, we use SRP. We use SRP in electrochemical series because IUPAC में बोला and I also IUPAC gave a good reason for that. Now, at the second point, if SRP is low, if the standard reduction potential is low. Now, those who can turn their mic on, please turn your mic on. Please turn your mic on, guys, and tell me if the SRP is low, then the ability to gain electron, that means the ability to get reduced will be higher or lower? Higher What do you ना guys sir, think? higher ना। हाँ, तो फिर आप लोग जाइए, क्लास छोड़िए, पिछली क्लास आप लोग रिवाइज कीजिए जो लोग हायर बोल रहे हैं। The tendency of an electrode to higher the value of reduction potential, higher is the tendency to gain electron or to get reduced। ठीक है, तो रिवाइज नहीं करने का नतीजा यहाँ पे गलत आंसर दे रहे हैं। बताइए, if SRP is lower, ability to gain electron lower or higher? Tell me guys, if SRP is lower, ability to gain electron will be Lower. very good. Ability to gain electron is lower. That's why we can say ability to lose electron will be, if the ability to gain electron is lower, the ability to
If the ability to gain electron is lower, ability to lose electron will be higher. Higher. All of you got this? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. Okay, fine. Now my element has lower SRP. My element has lower SRP. They have a lower ability to lose electron. They have a lower ability to lose it. No, they have a lower ability to gain electron, and they have a better ability to lose electron. Let me drink water. Okay. Now my element has lower SRP and it has lower ability to gain electron, but it has higher ability to lose that electron. It has higher ability to lose electron. Now, when my element is losing electron, it is going to lose the electron and that electron will go to some other element, yes or no? Because if you remember, the zinc was losing electron and that electron was going to copper. You guys remember this, yes or no? Please tell me. Yes, sir. All of you. If my element is losing electron, there will be some other element which will be gaining electron. Is that right? Yes, Yes sir. or no, guys? Please tell me. Okay. That means my element, what it is doing, the one which is having lower SRP, lower reduction potential, it is reducing someone else, right? It is not getting reduced itself, it is reducing someone else by losing electron. When it is losing electron, what was happening? We had zinc. Zinc gave 2 electron, and these 2 electron reached copper 2 plus, and this copper 2 plus was reduced. So who was reducing copper 2 plus? Please tell me, guys. Who was reducing the copper 2 plus? Zinc was reducing the copper 2 plus, right? Because zinc gave the electron to copper 2 plus. Can you see this, guys? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. Adriel, Kinsta, Maimuna, Samaira, Yes, sir. Huzaifa, Fahad, all of you Yes, sir. Yes, sir. understand this thing? Okay. Now, if the ability to lose electron is higher, that means it has higher reducing power. If it has higher reducing power, then I will say it is better reducing agent. It is better reducing agent. So if the reducing power is high, oxidizing power will be low, and it will be worse oxidizing agent. Third point, reducing power is inversely proportional to SRP. Oxidizing power is directly proportional to SRP. The ability to oxidize someone else is higher if you have a high standard reduction potential. Okay. So you can oxidize someone if you yourself is getting reduced. You yourself have to get reduced, then only you can oxidize someone. Write this, everyone. Please let me know if you have any doubt here. नहीं, किसी को डाउट होगा, किसी को फिर से पूछना है तो पूछ सकता है, ठीक है? Try to do both the things. Try to understand the logic. You can start the logic from here. SRP is lower. That is why it has a lower ability to gain electron. That means it will have higher ability to lose electron. If it is losing electron, it is going to give electron to someone. That guy is going to take the electron, and that guy is going to get reduced.
So my reducing power is high, and that is why I'm a better reducing agent. And vice versa for the oxidizing power. All of you wrote this, yes or no? Please tell me, guys. All of you wrote this? Yes, sir. Okay. Okay, sir. Now, again, my favorite data. Now, here we have a question also. Samara, read the question, please, for me. Samara, read the question for me. So from starting, No, arrange it. arrange these metals in their increasing order of reducing power. ठीक है, क्या बोल रहा है आपको? In the increasing order of reducing power. Now we have written something. Reducing power is what? It is inversely proportional to SRP. Yes or no? Yes. Okay. It is inversely proportional to SRP. And you know that we have dealt with this data so many times. All of these are reducing potentials only, SRP only. Yes or no? Yes, sir. Okay, fine. Now, increasing order, यानी कि जिसका सबसे high है वो आखिर में होना चाहिए. So you tell me here, the reducing power should be high. SRP हमारा क्या होना चाहिए? Low होना चाहिए. ठीक है, तो we will start from the highest SRP. And then we will go towards the lowest SRP. Highest SRP will give me the worst reducing power because inversely proportional, and lowest SRP is going to give me the best reducing power because inversely proportional. All of you understand this? Yes or no? Please tell me, guys. All of you understand this? हाँ केंद्र बताइए. Yes, sir. Okay. Now tell me, the highest SRP is for which one? Which is having the highest standard reduction potential. सबसे ज़्यादा value कहाँ पे है यहाँ? What is the largest value that you can see here? What is the largest value that you can see here? अरे AG. Adriel जोर से बोलिए. You can't hear you, Adriel. AG. हाँ, हाईएस्ट वैल्यू जो है वो AG तो वर्ड होता है ना. हाईएस्ट वैल्यू 0.80 ऐसे देखिए, ठीक है ना? Okay. Where is the highest value, guys? Please answer me, all of you. What is the highest value that you can see here? Plus 0.80. 0.80, very good. And 0.80 belongs to? Silver. 0.80 belongs to AG, right? So we'll write first of all AG, and after that? HG. Very good. After that? CR. Yeah, correct. After that? MG. And then? Then potassium. Okay. Potassium. किसी को कोई डाउट है यहाँ पे? प्लीज टेल मी. Any doubt, guys? No, sir. No. जल्दी से छापिए. This question has been asked in the past, I think 10 years, 3 times it has been asked in the board examination. Okay.
Now you guys write the series. Okay. Now the whole series, that is the electrochemical series, and I will also give you a trick to remember it. I will also give you a trick to remember it. Okay. Now I have divided the series into two different parts, and we are going like this. Okay. And we are going to write about the metals only. So here somewhere you will get hydrogen, which will have 0. And in this side, इधर क्या होगा? पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, बताइए. अरे नंबर लाइन में क्या होता है इधर? पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है? Negative. Negative. So this will have negative SRP. And here they are going to have positive SRP. ठीक है? Okay, so the first element is lithium. Okay, in the negative start. So lithium का सबसे ज़्यादा negative होगा. Yes or no? Please tell me, guys. Can all of you see that? Yes or no? Please tell me. Yes. Okay, and जो सबसे आखिरी में है यहाँ पे, that is your PB. ठीक है? इसको ध्यान रखें यहाँ पे. And then you are going to write the series. I have also called all of these elements which are having negative SRP as wedding elements. Okay, as wedding elements. Now, there is a wedding. Wedding किसका है? Wedding है एक आदमी का जिसके सिर्फ एक ही आंख. So what do we call one-eyed person in Hindi? Someone has one eye. What do we call them? हिंदी में वर्ड क्या होता है? समायरा बताइए. अरे एक आंख वाले को क्या बोलते हैं? जैन आप बताइए. अंधा. सॉरी, अंधा. अंधा. ब्लाइंड. हाँ. नहीं 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 नहीं, वो तो उसके तो दोनों आंख खराब होंगे ना. एक आंख जिसका खराब है. अरे नहीं फहद, फहद जिन बोल रहे हैं. अरे एक आंख जिनका खराब रहता है क्या बोलते हैं? समायरा आप बताइए. अब्दुल रहमान, टेल मी. सर एक आंख वाला. एक आंख वाला इतना लंबा नहीं बोलते हैं. किंजा इज सेइंग दज्जाल. अरे नहीं किंजा, ठीक है. अच्छा, आई थिंक नाउ यू विल अंडरस्टैंड पीपल. लाइक वी से काना दज्जाल, राइट? हैव यू हर्ड दिस वर्ड? काना दज्जाल नहीं सुना आप लोगों ने? You must have heard this, right? No, अच्छा नहीं. Okay, fine. ठीक. So Adriel, you must be thinking, what is Dajjal? Do you know what is Dajjal, Adriel? No, sir. No? Okay. You know Antichrist? Yes. So it's the same concept. Okay. It's the same Okay. concept. Antichrist. So the prophecies is like that he's going to be one-eyed. So Kana is the word actually. You guys not know Kana for Kana or Kana for one-eyed person, है ना? तो इसीलिए तो आपसे पूछ रहे थे हम, आप बता ही नहीं रही हैं. ओके, सो नाउ किसकी शादी हो रही है? काना की शादी हो रही है. अब उसकी शादी होगी तो उसको तो बहुत मजा आ जाएगा, राइट? जस्ट इमेजिन. नाउ ही सेइंग लेके बारात. सो लिथियम लेके बारात, काना मजे से आया. लेके बारात, काना मजे से आया. दिस इज वन थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर.
लेके बारात काना मजे से आया. Okay, now usually what happens, the weddings they happen in night or day. इंडिया में बताइएगा, इंडिया में कब होते हैं? दिन में होती है, रात में होती है? Sir, nights. रात में होती है. अच्छा, और जो बाराती आते हैं उनके लिए इंतजाम रहता है रुकने का भी, है ना? अगर दूर से बारात आती है तो रुकने का इंतजाम रहता है, फिर अगले दिन वो लोग रुखसती करके जाते हैं, है ना? ऐसे ही होता है. यस सर. ठीक है, किंजा को बहुत मजा आ रहा है. तो अच्छा, वेडिंग से रिलेटेड क्या चीज है? मतलब शादी क्यों जाते हैं आप लोग शादी में? किंजा आप बताइए, क्यों जाती हैं आप शादी में? किसी की भी शादी होती है Sir, खाने. खाने जाते हैं, राइट? सो इट इज लाइक ऑब्वियस. तो अब जब रात में शादी वादी हो गई, सुबह उठ के बारातियों को खाना का इंतजाम देना पड़ेगा, राइट? देयर शुड बी सम अरेंजमेंट फॉर फूड आल्सो इन द मॉर्निंग. बट व्हाट शुड द ग्रूम बोलते हैं ना, हाँ, व्हाट शुड द ग्रूम पीपल डू बिफोर ईटिंग, बिफोर हैविंग ब्रेकफास्ट? क्या करते हैं खाने से पहले? खाने से पहले क्या करते हैं? अरे क्या करते हैं खाने से पहले? हाथ धोते हैं. अरे हाथ. सुबह में ब्रेकफास्ट में हाथ तो हमेशा धोते हैं. ब्रेकफास्ट में क्या स्पेशल रहता है? नहीं Some नहीं, milk. अरे नहीं नहीं नहीं, हम लोग क्या करते हैं खाने से पहले? सुबह नाश्ते से पहले क्या करते हैं आप लोग? Sir, brush. सुबह उठ के साथ, हाँ, ब्रश करते हैं, राइट, वेरी गुड. ब्रश करते हैं. लेकिन गांव है, ठीक है ना, तो गांव में तो ब्रश होगा नहीं. गांव में क्या होता है, मिसवाक जैसी चीज होती है जिसको क्या बोलते हैं, मंजन बोलते हैं. मंजन करना बोलते हैं. यू नो मंजन करना? हाउ मेनी ऑफ यू नो मंजन करना? है ना, सुना होगा आप लोगों ने. मंजन करना मीन्स ब्रश करना. ओके, मंजन करना मीन्स ब्रश करना. तो वही करना है. क्या करना है? मंजन करना है. क्या करना है? मंजन कर. ओके, मंजन कर. Now those miswak things, which are very cheap. Now miswak is a bit expensive, but if you see the datun that we have in Indian villages, so people, they will just brush their teeth, and they have a lota in their hand. They go to field, they brush their teeth and they throw it. So manjan kar, फेंक दे. क्या कर दे? यूज एंड थ्रो. मंजन कर, फेंक दे. Okay, मंजन कर, फेंक दे. Fine. Now they have done it. So obviously I am not writing anything about the food because food is already there. ना, food खाने के लिए किसी को बताना नहीं पड़ेगा कि शादी में खाना भी होता है. बट ये सभी सारी चीजें याद दिलानी पड़ती है, कहीं लोग भूल जाए, है ना? तो मंजन कर, फेंक दी, इसको आपको याद रखना पड़ेगा खाने से पहले. नाउ वंस सब हो गया, खाना पीना, रुखसती हुई, तो रुखसती के बाद अब दैट गाय इज गोइंग विथ हिज ब्राइड. हिज ब्राइड होगा, हर ब्राइड होगा? इंग्लिश का सवाल है, बताइए जरा. हिज ब्राइड होगा, हर ब्राइड होगा? His bride. His bride. His. हाँ, सही है. सब सही करके रखें आप लोग ब्राइड चूज करने के लिए ना. हिज ब्राइड, वेरी गुड. नाउ आफ्टर दैट, अब वो सबसे एक अंधा आदमी बेचारा, एक अंधा नहीं, काना आदमी बेचारा, लाइक इफ ही इज गोइंग टू सी हिज ब्राइड, then obviously he's going to see her eyes first of all, right? And he will look at eyes and obviously he will be very much mesmerized and he will say, कोई निगाहें सुंदरी प्यार, कोई निगाहें सुंदरी प्यार. ओके, दैट्स इट. कहानी यहाँ पे खत्म हो जाती है. फिर आता है हमारे पास हाइड्रोजन जीरो, एंड आफ्टर हाइड्रोजन जीरो वी हैव द छापा एलिमेंट्स. We have the chapa elements. In chapa we have copper. Here, see, here we have copper, and after we have Hg. After that we have silver. Then we have platinum. And platinum के बाद सबसे महंगा वाला, सॉरी Ag लिखना था हमने, Au लिख दिया. सबसे महंगा क्या होता है? गोल्ड, है ना? तो अगर आप कंफ्यूज हो जाए छापा का ये ए सिल्वर है या गोल्ड है, तो आपको याद रखना चाहिए कि सिल्वर जो गोल्ड है उसकी सबसे ज्यादा वैल्यू होगी, उसी तरह सबसे ज्यादा उसकी एसआरपी भी होगी. Okay, guys, so you have divided the wedding part into wedding elements into three different categories. The first is the barat one. So leke barat. Let me try it in Hindi also. Leke barat. This is going to be kana. मजे से आया. ये ऐसी नहीं है, ये एसआर है, ठीक है? This is SR. स्टोरी पब्लिश कर दें. Okay, after that we have
मंजन कर फेंक दे। Then we have कोई निगाहें सुंदरी प्यार भरी। कोई निगाहें सुंदरी प्यार भरी। ठीक है। एड्रियल, डू यू नो हिंदी? हिंदी पढ़ा है आपने? Yes, Yes, Adriel? sir. Yes. All of you know Hindi ना? Because ऐसा कभी कभी होता है, I have some student who are not also Indian, so they don't know Hindi. But I think everyone is from India, or at least they will know Hindi. ये डाउन एरो बस आपको ये बता रहा है कि आपको कैसे याद करना है। ओके, these are wedding elements with negative SRP, and these are going to have positive SRP. Okay, guys. लिख लिया क्या सबने? All of you wrote this? Yes or no? Please tell me. Done, sir. Done. Okay. चलिए. Now turn your mic on, guys. All of you, Adriel, Abdurrahman, Fahad, Huzaifa, Kensa, Maimuna, Samaira, and Zan. All of you guys turn your mic on. Yeah, very good. Yes, Okay, sir. fine. On कीजिए everyone. Now you will repeat after me. लेके बारात, लेके बारात, खाना मजे से आया। खाना मजे से आया। दिल से आया। लेके बारात, लेके बारात। लेके बारात, एकदम मदरसे के बच्चों की तरह बोलिए, जो जो बोल रहे हैं हम। ठीक है, लेके बारात, लेके बारात, खाना मजे से आया। खाना मजे से आया। मजे से आया। मंजन कर फेंक दे, मंजन कर फेंक दे। मंजन कर अच्छा। फेंक दे। मंजन कर फेंक मंजन दे। कर फेंक दे। कोई निगाहें सुंदरी प्यार भरी। कोई कोई निगाहें निगाहें सुंदरी सुंदरी प्यार भरी। वेरी गुड। नाउ वंस अगेन। लेके बारात, लेके बारात, खाना मजे से आया। खाना खाना मजे से मजे से आया। आया। मंजन कर मंजन कर जन कर फेंक दे। फेंक दे। फेंक दे। कोई निगाहें कोई निगाहें कोई निगाहें सुंदरी प्यार भरी। सुंदरी सुंदरी प्यार प्यार भरी। भरी। बाकी सब कम होते जा रहे हैं, अब एक एक करके ऑफ करते जा रहे हैं माइक। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 0 बोलिए। हाइड्रोजन 0 जीरो, छापा। हाइड्रोजन 0 हाइड्रोजन 0 छापा। 0 छापा। छाप। कौन सुनाएगा? आप केंद्र सुनाइए जरा। ओके डोंट लुक एनीवेयर। ओके, डोंट लुक। ओके। लेके बारात, गाना मजे से आया। ब्रश करना है अब। मंजन कर फेंक दे, लेके नहीं, उसके बाद में सुंदरी नहीं, प्यार भरी। कोई निगाहें सुंदरी प्यार भरी। हाँ, उसके बाद निगाहें सुंदरी प्यार भरी। हाइड्रोजन 0 छापा। ओके। अब्दुर्रहमान, यू गो ऑन विदाउट लुकिंग। लेके बारात, खाना मजे से आया। मंजन कर फेंक दे। कोई निगाहें सुंदरी प्यार भरी। H0 छापा। वेरी गुड। ओके, फहद आप सुनाइए।
फहद आप सुनाइए। क्या हो गया फहद? अच्छा ठीक है। मैमुना आप सुनाइए। यस सर। हाँ। लेके बारात काना मजे से आया, मन जन कर फेंकते, कोई निगाहें सुंदरी प्यार भरी, H0 हाइड्रोजन 0 छापा। वेरी गुड। ओके समायरा, नाउ यू। समायरा आप सुनाइए। अरे जल्दी सुना के खत्म कीजिए, इसको याद हो जाएगा ना तो बहुत सारे सवाल बन जाएंगे इससे। ओके, यू डोंट हैव टू रिमेंबर मेनी थिंग्स। ओके, सिम समायरा इज नॉट हियर। जैन, जैन आर यू देयर? यस सर। सुनाइए। लेके बारात खाना मजे जैसे से आया हूँ, मजे से आना, आया आया मंजर आया, मंजन करके फेंक देना, फेंक दे। हाँ ठीक है। कोई निगाह है सुंदरी प्यार भरी। प्यार भरी, ओके, हाइड्रोजन 0 छापा। हाइड्रोजन 0 छापा। कितने साल बाद हिंदी पढ़ रहे हैं आप जैन? 5 साल। ओ गॉड। कि समायरा आर यू देयर? Yes, sir. हाँ चलिए बताइए, पढ़िए, सुनाइए लेके सुनाइए। बारात खाना मजे से आया, मंजन कर फेंक दे, कोई निगाहें सुंदरी प्यार की, हाइड्रोजन 0 छापा। हाँ ओके फाइन, ठीक है। सो वन थिंग इज दैट यू हैव टू रिमेंबर दिस होल थिंग। देन अदर थिंग इज दैट यू हैव टू आल्सो एसोसिएट करेक्ट लेटर्स और करेक्ट वर्ड्स फॉर करेक्ट एलिमेंट्स आल्सो, है ना। अब जैसे आया का एल्यूमिनियम है तो ये आपको याद रहना चाहिए। जनरली सी लेके बारात खाना मजे से, लाइक टिल मजे mg इट इज फाइन, मजे से के बाद एस से जो है आपका स्ट्रोंशियम एंड एल्यूमिनियम है। So that is why I have also divided it. Like you have to remember, like when I am saying that बारात आ रही है तो आपको बस एक लाइन याद रहेगा, लेके बारात खाना मजे से आया। Then I will say that ब्रश कर रहे हैं तो मंजन कर फेंक, तो उसमें कौन कौन से एलिमेंट होते हैं उसका ध्यान रखिएगा जरा बस, ठीक है। देन कोई निकाय सुंदरी प्यार भरी, देन उनमें कौन एलिमेंट्स आते हैं उनका ध्यान रखिएगा। हाइड्रोजन 0 एंड देन छापा में कौन से एलिमेंट आते हैं उनका ध्यान रखिएगा। ओके, सो वी हैव वन होल थिंग where we have negative SRP, positive SRP, anti-hydrogen 0. But again in the negative SRP, because they are very, that is a long list, I've again segregated them into 3 parts. You have to take the barat, you have to brush your teeth, and then you have to look at the beautiful eyes, right? And those are all in together wedding elements that I'm going to call them wedding element. Is that clear? Yes or no? Please tell me, guys. Yes. Yes, sir. चलिए ठीक है. So also one more thing, and whatever your plans for Friday is, just cancel that because आप लोगों ने बहुत टाइम लिया मेरा इनोट सेल पढ़ाने में, ठीक है। तो इसके एप्लीकेशन जो है वो हम फ्राइडे के दिन क्लास लेंगे आपको। You will have class from 4 to 6 PM, जो आपकी सेम अभी जो क्लास होती है यही टाइमिंग में होगी, 4 to 6 PM। KSA टाइम में होता है ना आपका, KSA टाइम फ्राइडे, ठीक है। कहीं है कुछ भी? हाँ बताइए मैमुना। Sir, Friday I won't be here in Riyadh. That's your loss. फिर आप रिकॉर्डिंग देखिएगा, Okay, sir. ठीक है। हाँ ठीक है, जो जो भी कर रहे हैं, ठीक है, जो भी कर रहे हैं रिकॉर्डिंग देखिएगा फ्राइडे। अब जब आप कब आइएगा? मंडे को आइएगा अब ना। हाँ, जो लोग फ्राइडे को नहीं आएंगे मंडे को आएंगे तो वहां पे आप लोग को पढ़ के आना पड़ेगा। कोई नहीं आएगा हम खाली क्लास ले लेंगे, ठीक है। एग्जाम में आपकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आ रहा है, ये ध्यान रखिए। मोस्ट ऑफ द पीपल आर फ्रॉम दमाम, जिनका 6 अक्टूबर में है शायद ना टेस्ट। एड्रियल, एम आई राइट? 6 अक्टूबर। यस एड्रियल, कब एग्जाम? Yes, sir. 6th October. 6 अक्टूबर राइट। हाँ, तो उसको आपको कंप्लीट करना है, ठीक है ना। तो ये जो आप पता नहीं आप लोग सर नेशनल डे है फ्राइडे को, सेलिब्रेशन वगैरह होंगे, अरे तो कुछ नहीं ना, आप बारात में चले जाइए, सेलिब्रेशन होंगे तो हुज़ैफा। अरे नेशनल डे है फ्राइडे को, सऊदी गवर्नमेंट तो कुछ नहीं करेगा ना, सऊदी गवर्नमेंट करेगा तो फिर कुछ होगा, ठीक है हम देख